So good morning, everyone. Today we are going to practice for the shortcut keys. Okay, and we will use keyboard also for this all these menu options. Okay, without using mouse, we will use all this option with the help of keyboard. So today I will teach you how to use this all these option with the keyboard. Okay, we no need of mouse to use all these options. But in the previous class, we already studied about the shortcut keys like page break, control enter, superscript, format painter, change case, bold, paste, copy, font, find, replace, justify, subscript, go to, select all, spelling grammar, threshers, ruler hide and view option, and other shortcut keys also we did practice. Okay, but for that, if you want to apply directly we bold, so we can click here. If I want to apply italic, so I can use this option for italic, control I, for underline control U I can press. But suppose I want to apply other options like bullet option, numbering option from the keyboard, and suppose sometime the mouse is not working in your computer. Okay, there's some problem in the mouse, so and you have to do some urgent work with the help of keyboard. How can you do that work? So we are going to learn today this thing. ठीक है, तो वो हम देखेंगे आज कैसे करना है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी के अंदर। आज हमको शॉर्टकट कीज प्रैक्टिस करना है। इससे पहले के क्लास में हमने ये प्रैक्टिस किया था। इधर शॉर्टकट कीज था पेज ब्रेक, चेंज केस, बोल्ड, पेस्ट, कॉपी, फॉन्ट, फाइंड, कॉपी पेस्ट हो गया, कट हो गया, ये सब हमने प्रैक्टिस किया था। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, जस्टिफाई, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ये सब हमने प्रैक्टिस किया था। बट आज हम दूसरा यूज करेंगे ऑप्शन कि अगर हमको कीबोर्ड से ये सारा ऑप्शन यूज करना है, मेन्यू में जितने ऑप्शन है, ओके, लाइक ऑल दिस ऑप्शन, इंसर्ट के अंदर ये सारा ऑप्शन है, पेज लेआउट के अंदर ये सारा ऑप्शन है, रेफरेंस में ये जितने भी ऑप्शन है, ऑल दिस ऑप्शन यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ये सारा हम कीबोर्ड से कर सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर का माउस खराब है, काम नहीं कर रहा है, तो भी हम कीबोर्ड से ये सारा काम कर सकते हैं। तो वो आज हमको सीखना है, ठीक है। सो फॉर दिस आई नीड वन न्यू पेज। तो एक न्यू पेज लिया हमने यहाँ से। आई जस्ट क्रिएट वन न्यू पेज हियर and need some data here also, so equal rand. Okay, then I'm going to insert 5 paragraphs. I'm not using keyboard, sorry, I'm not using the mouse right now. Suppose I want to select all, then I can press control A. I want to apply the justify, this option, the all option, so directly I can press control J, right? And suppose I want to apply this change case option, this option, so this shortcut is shift F3, so I can press from the keyboard shift F3 like this. All will change, right, with the help of keyboard. But suppose I want to apply some color option from here, ये वाला option use करना है हमको, color option use करना है, so how we can apply? और suppose I want to apply superscript, subscript, ये सब करना है, कैसे करेंगे? With the help of keyboard, वो हमको देखना है. So it's very easy. Before apply anything, you have to select. Before apply anything, you have to select, and you know how to select, right? You can select with the mouse like this, or otherwise if you want to select with the keyboard, so it's very easy. First I will tell you how to select with the keyboard. Okay, suppose I want to select this, ये हमको select करना है. How we can select? Just leave the mouse, sorry, leave the cursor before O, and then press shift key from the keyboard, shift key from the keyboard, and then right arrow key, right arrow key, shift and right arrow key. Let me show some keyboard also. Just wait a minute, मैं कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो इजी हो जाएगा आप लोगों को. आई थिंक इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है. दिस वन इज ओके.
Please look at here. This is a shift key, this is a control key, this is window key, and this is the alt key. Okay. Okay, इसमें वाला ऑप्शन नहीं है arrow keys. Let me download another keyboard which has that key also. ये वाला करता हूँ. Now look at here. There's a control key, shift key, alt key. This is a window key. Okay. And there's a two shift key here on left side and then right side. There's two alt key, left side and the right side. Two control key, left side and right side. And there's a two enter key also on the right side and then right side bottom this side. Okay. And these are arrow keys: up arrow key, down arrow key, left arrow key, and this is the right arrow key. Okay. Up, down, right, left, up, down, right, left arrow. So we will use this option shift and we have to press these arrow keys to select. Okay. If for example cursor is here, okay, and if you want to select like this on the right side, if you want to select words, alphabets from right side, okay, from left to right side of the cursor, so you have to press this shift key and then right arrow key. Okay, let me show you. My cursor is here. Now I am going to press shift and then right arrow key. It will select one by one letter, one by one alphabet. ठीक है, एक के बाद एक अल्फाबेट सेलेक्ट होगा ऐसे. अगर आप क्या प्रेस करोगे, शिफ्ट एंड राइट एरो की. देखो, शिफ्ट प्रेस किया और राइट एरो की प्रेस किया, इससे क्या होगा, एक एक अल्फाबेट सेलेक्ट होगा. ये देखो, राइट. अगर आपको पूरा, अगर ये नीचे सेलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट और डाउन एरो की, इससे क्या होगा, ये पूरा नीचे सेलेक्ट होगा, एक लाइन नीचे सेलेक्ट होगा. बिफोर सेलेक्ट यू शुड नो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एरो कीज. एरो की से क्या होता है, अप डाउन राइट और लेफ्ट साइड मूवमेंट होगा कर्सर का. ओके, लाइक कर्सर कहाँ पे ऊपर है, अगर डाउन एरो की प्रेस करोगे तो कर्सर नीचे जाएगा ऐसे करके. राइट एरो की प्रेस करो तो राइट साइड में मूवमेंट होगा, और लेफ्ट एरो प्रेस करो तो लेफ्ट साइड में मूवमेंट होगा. ओके, राइट साइड के लिए राइट एरो की प्रेस करो ऐसे करके, लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट वाला, आपके लिए ऊपर ये वाला, और डाउन नीचे के लिए ये वाला एरो की. ठीक है. बट सपोज यू आर हेयर right now and I want to move this cursor from here to beginning of the page document. So it's very easy. Press control home, control and home key, control and home key, ye wala. Press this control key and this home key, so the cursor will move to the मैं दिखाता हूँ. ठीक है, ये कंट्रोल और वो होम की प्रेस करना पड़ेगा तो कर्सर आपका स्टार्टिंग पे आ जाएगा. लाइक कर्सर इज हियर and you want to move the cursor here, so you have to press this control key and this home key. Okay, now I'm going to press from the keyboard control and home. It is starting, it will come. Okay, अगर आपको कर्सर जो है, इफ यू वांट टू मूव दिस कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन, ये लाइन के लास्ट में लेके आना है, सो देन सिंपली प्रेस कंट्रोल एंड एंड की. ये कंट्रोल की और एंड की, कंट्रोल और ये एंड की प्रेस करोगे तो ये लाइन के लास्ट में आ जाएगा कर्सर. अभी स्टार्टिंग में है कंट्रोल और एंड की. सॉरी 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 सॉरी, अगर लाइन के लास्ट में लाना है तो ओनली एंड की. सिंपली प्रेस एंड की, सो देन कर्सर विल मूव टू दिस एंड ऑफ द लाइन. And if you press home key, then cursor will move to the beginning of the line. End की प्रेस करोगे, then end of the line. Home की प्रेस करो तो beginning of the line. But if you want to move this cursor at the bottom of the page, सबसे नीचे लेके आना है तो control plus end. This control key plus end key, the cursor will move to the end of the document. Control and end key like this. ये सबसे नीचे आ गया. And if you want to move the cursor beginning of the document, then press control and home key. Now press control and home key. See? Okay. If you want to move the cursor end of the document, then control end key. Beginning of the document, control home key. On the right side, control. If you want to go on the end of this line, then press
end key. If you want to move this cursor beginning of the line, then press home key. Okay. And if you want to move the cursor down, then press down arrow key. And to move up, then up arrow key. It's for the movement. But if you want to select, then you have to press just only shift key with this selection movement keys, right? Like if you want to select like this on the right side, so it's very easy. Press shift key and then right arrow key. It will select one by one letter, one by one letter. But suppose if you want to select this complete line, okay, and you know very well how the cursor will move to the end of the line with the help of end key, with the help of this end key, then you have to press only shift and end key, then complete line will select. Shift और end key, तो ये पूरा line select होएगा ऐसे, shift or end key. And suppose the cursor is the end of the line, or you want to select like this, so it's very easy. Press shift and then left arrow key, shift and left arrow key to select one by one letter. But if you want to select the complete line with a one single key, then press shift and home key, shift or home key, shift और होम की. अगर कर्सर आपका लास्ट में है और आपको ये पूरा लाइन सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? शिफ्ट और ये होम की, शिफ्ट प्लस होम की, लाइक दिस. ठीक है. और शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करोगे तो एक एक लाइन पूरा सेलेक्ट होकर नीचे जाएगा ऐसे करके. दिस आर सिलेक्शन ऑप्शन. ओके. If you press right arrow key, so it will come one by one letter. Okay, one by one, only one alphabet, it will go to the right side. If you press left arrow key, so the cursor will move to the one letter left side like this. And end for at the end of line, home key for beginning of the line. But suppose you want to move the cursor on after one word like this, like that, ऐसे करके move करना है, but with the help of keyboard. It's also very easy. Press control and right arrow key, control and right arrow key. Then cursor will move to the one word right side. Cursor will move one word right side. This control key and then this right arrow key to move the cursor one word right side. Okay. See, control and right arrow key. It will move one word right side like this. And if you want to go back one word left side, then control and left arrow key. Control and left arrow key. ये वाला कंट्रोल और लेफ्ट एरो की प्रेस करोगे तो एक एक वर्ड लेफ्ट साइड में मूवमेंट होगा. कंट्रोल और लेफ्ट ऐसे. वेरी इजी. अगर आपको एक एक पैराग्राफ मूव करना है नीचे, तो इफ यू वांट टू मूव वन पैराग्राफ लाइक दिस ऐसे, तो उसके लिए कंट्रोल एंड डाउन एरो की, कंट्रोल एंड डाउन एरो की. सी. And if you want to go one paragraph up, then control and up arrow key, control and up arrow key. This is control and up arrow key and control and down arrow key. This key you have to use to move the cursor one paragraph up and one paragraph down. And suppose you want to select this complete paragraph, then press shift, control and down arrow key. Because we know if I press control and down arrow key, the cursor will move to the one paragraph down. And control home for one paragraph up like this. And if I want to select, so just only I have to press shift with the movement key, right? Like this. कर्सर नीचे, आपको एक पैराग्राफ ये पूरा सिलेक्ट करना है ऐसे करके, तो बहुत इजी है. कंट्रोल प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करो एंड अप एरो की प्रेस करो लाइक दैट. You can write your question and your confusion in chat option also. Okay, is it clear everyone? Okay, so is it clear everyone? Okay, fine. So now you can select with the help of keyboard. You no need of mouse. Okay, आप without mouse भी आप selection कर सकते हैं. Now I'm going to select this paragraph. Okay, so shift and then right arrow to select all. Suppose I select all this, suppose I select this paragraph and I want to change the font. I want to change the font from here, from the here. So how I will, how the option will come here na? My cursors will come here. ये कहाँ पे कैसे आएगा? So it's very easy. First select कर लो आप
and after selection press alt key from the keyboard. क्या करना है? Alt key, or leave it at, let me show you first. When you press alt key from the keyboard, इसको सेलेक्ट कर लो पहले, चलो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया. नाउ प्रेस alt from the keyboard. क्या प्रेस करना है? Alt key from the keyboard. When you press alt key from the keyboard, so all these options, see, it's highlighted, all the options. क्या प्रेस करना है? Alt. After selecting this with the keyboard, you have to press this alt key. This is the alt key, okay? You have to press this alt key from the keyboard. Press alt key, तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा. All the options are active. Like if you want to use file option, then you have to press F. If you want to home option, then you have to press H. If you want to insert option, then you have to press N. If you want to go for the page layout option, then you have to press P. If you want to go to the reference option, then you have to press S. If you want to go to the mailing option, then press M. If you want to go to the review option, then press R. If you want to go to the view option, then press W. And for Foxit PDF, plus Y1. And for now PDF option, you have to press Y2. Okay. For suppose I want to go insert option, क्या press करना है? Insert option. Then it's very easy. From your keyboard, press N. From your keyboard, press N. When it's active, press Alt. All will active. Now it is showing you have to press N for the insert option. Now I'm going to press N from the keyboard. See, जैसे ही मैंने N press किया, these all options are active in the insert option. Insert option के लिए सारा active हो गया देखो. Suppose I don't want to use this insert option, then press escape key from the keyboard. If you want to, don't you want to use this option, then it's very easy. Press ESC to cancel all the operation. Whenever you are working on a computer and you want to cancel any option, so you have to press ESC. Okay, ESC, this key, escape key. So I'm going to press escape key. वो हट गया. Okay, suppose now I want to go again home option. किस पे जाना है? Home option पे. Then press again Alt from the keyboard. It's all active. Now to go home option I have to press H. क्या press करना है? H press करना है. तो मैंने simply यहाँ पे press किया H. H press कर दिया. Suppose now I want to apply bold. क्या press करना है? Bold apply करना है. तो now it's showing we have to press 1. क्या press करना है? 1. If I press 1 तो bold will apply. देखो ये हो गया. Now selected है ये पे. Press Alt again. Again press H for home option. Home press किया. जैसे home press किया ये सारा option आ गया. Suppose you don't want to apply bold, you want to remove this bold, so you have to press again 1. If you want to press the again 1 press के again देखो वो हट गया. ठीक है. Now suppose I want to change the font style. यहाँ से name change करना है, कोई और font style change करना है. Then press Alt again. Go H for home option. Now what is the key for the this font option? FF. FF. Is there any key of FF in the keyboard? No. But FF means you have to press 2 times F. You have to press 2 times F key from the keyboard. ठीक है. तो मैं क्या कम करता हूँ? Alt press करता हूँ. Then I am going to home option H. Then I have to press 2 times F key from the keyboard. FF. See? जैसे FF press किया देखो यहाँ पे highlighted हो गया ये. It's highlighted. Now you can use the down arrow key. Down arrow key. I'm going to repeat again. Down arrow key. ये वाला arrow key use करना. ठीक है. तो ये सारा ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ देखो. First press Alt. Then for home option press H. For this font style press FF 2 times. Now this option is active. Calibri body, the font name. Now press down arrow key to change the font name. Like this. You want to apply, then press enter key. Then press enter key. That's it. Simple. I select this paragraph with the help of keyboard. Now I am going to again home option with Alt and then H. Now I want to change the font color. I want to change the font color. What is the shortcut key for the font color now? FC. Now I have to press F or C from the keyboard. F and C. F press करो, then press C also from the keyboard. ये हो गया. Now use down arrow key. Down arrow key. Right, left, down arrow key. ये सब there are 4 keys, right? Up, down, right, left. आपको जो भी कलर चाहिए होगा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे.
which one you like, then press enter key. Simple. Going to select this. I want to apply underline. Okay, so press alt, press H for home option. For underline, which option? 3. Now which kind of underline we want, so it's up to us. इसमें से जो भी चाहिए आप यहाँ पे select कर सकते हो, right? This one. Now change the color, underline color. You can see M for underline and this for underline color for the another option is coming ना. एक बार free से करते हैं, चलो. ये selected है, then press alt, home H. For underline press 3. Now underline color के लिए U. For the underline color press U. जैसे press करेगा ये आ जाएगा. Now you can change the color of underline also. You want to change the style, then alt H for underline 3. Change here the style like this. Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay, Yes, good. sir. Good. Yes, sir. Yes, sir. So now this like same you can apply, use all these options from the menu option. Menu में जितना options आप सब use कर सकते हो. Okay, like cursor is here. Now going press alt. For insert press N. Now suppose क्या press करना है? Okay, I want to page break from here. I want to use the page break. ये वाला use करना है. कहाँ से? After this directly. Okay, so it's very easy. Go alt option, then and for insert, and then for page break press B. See, page break applied. Okay, now again press alt, then N for insert, then click on the F for flip this clip art. Now search an image here. अपना आप ऑप्शन आ गया, सर्च कर लिया. Now use tab key from the keyboard. Use tab key. Okay, this tab key from the keyboard, because right now your cursor is here. It is selected blue color, so the cursor is here. Okay, so मैं एक बार फिर से repeat करता हूँ. Okay, press alt, then for insert press N key, then clip art press F key, then we search the image here, then use tab key from here. When you use tab key, so one by one, so it will come to here ना, ये show करेगा आपको. Now this is the first image selected, ये वाला selected है. Now use the arrow key. आपको जो भी image चाहिए आप यहाँ से select कर सकते, arrow key use करो. Which one you like? Suppose I want this image, right? ये selected है. Now press enter key from the keyboard. ये add हो जाएगा. आप जिसको okay करोगे वो यहाँ से add हो जाएगा. Is it okay, everyone? Yes, sir. Good. Yes, sir. Good. So same, with the help of the same option, you can use all these options. इसमें जितना भी options आप सब try कर सकते हो, like bold, italic, underline. ये वाला option हो गया. Change, grow font, shrink font, change case, clear formatting option. All these options, insert के अंदर जितना भी options है, ये सब आप यहाँ से use कर सकते हो with the help of this way. Okay, if your mouse has any problem and you have to do work, so you can do with the same like this. ठीक है, ऐसे ही काम कर सकते हो. आपको माउस में प्रॉब्लम है तो आप विदाउट माउस भी पूरा काम कर सकते हो कंप्यूटर पे, लाइक दिस. Is it okay, everyone? Yes, sir. Is it interesting today's lesson? Yes, sir. Very nice. Yes, Yeah. sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir.